Good evening, everyone. I am CA Ribhav Gia, moderator of this webinar. We are delighted to welcome you all in the webinar being organized by Continuing Professional Education Committee of ICI. It is my pleasure to be moderator for the 69th webinar on professional excellence in the digital age and GST litigations. In a short while, we will start the webinar. First, I would like to apprise you about the CPE committee. In today's ever changing professional scenario worldwide, the biggest challenge the profession faces is how to stay on the top of their game while adapting to new requirements and norms. Therefore, it is imperative to aim to be up to date to offer unique guidance, influence other with their innovative approach and expertise. It is also vital to stretch old ideas beyond traditional boundaries to create new perspectives. In this context, containing professional education facilitates professionals to maintain, improve, and broaden their knowledge, skills, and expertise required to achieve their professional goals through webinars, seminars, etc. The for this evening is as follows. We have two sessions of 1 hour each, and topics are as follows: Professional excellence in digital age, from detective to preventive governance, GST litigations. Our eminent speakers will talk about the above two emerging areas of professional interest. I would like to introduce CA Premnath Digala ji, who is the speaker of the speaker of the session, Professional Excellence in Digital Age, from detective to preventive governance. Before inviting CA Premnath ji, I would first like to read out a small biodata of him. CA Premnath Digalaji is a fellow chartered accountant with extensive experience in internal, external, and forensics audits across large manufacturing companies, PSUs, infrastructure, and software sectors. He specializes in bank audit, income tax representation, including international taxation and transfer pricing, and reviews of IFC, SOPs, and SAP implementation. He has contributed significantly to ICI through his roles in PRB, FRRB, TAQRB, QRB, and various technical and AI focused communities. He also submitted key proposals on FRRB automation and audit automations too. He is a regular speaker of ICI since 2000 and serving as a facility for certification courses on concurrent audit, GST, AI, AML. Sir, now I would like to invite you to start your session. Yeah, thank you. Thank you very much. At the outset, I thank CPE committee for giving me this fantastic opportunity to interact with the members on the topic digital age, detective to preventive governance. Today, let me just start with the importance of today. As you all aware that today is Bhagavad Gita Jayanti. Today is celebrated as Gita Jayanti. It is believed that today Lord Krishna has delivered Gita to Arjuna on the battlefield. So why are we discussing about Gita Jayanti today? As you all know, the world has recognized, UNO has recognized, world has recognized Bhagavad Gita as a governance, as a super governance model. So today I am just trying to see how best the Bhagavad Gita can be a governance model for the chartered accountants, or whether our ICI code of conduct or standards or ethical standards are already having the Gita's governance model embedded into our ICI code of conduct. I would like to relate both in this
today's presentation with practical approaches on certain case studies. So I have not made any PowerPoint presentation. I'll just move with HTML presentations only. I made two specific HTML presentations. I'll run through those things, and yeah, yeah. Thank you. I'm sharing now. Yeah, right. I think kindly confirm this is, yeah. Let me make it as full screen. Yeah, okay. So I said detective to preventive governance framework. I'm just trying to take lessons from Gita. That is today being Gita Jayanti, Bhagavad Gita Jayanti, Ekadashi. This month's Ekadashi is treated as Gita Jayanti. So I'm trying to integrate Gita's leadership and governance lessons with ICI, ethical, legal, and technical framework for the CA profession. Framework reads the this framework reads the CA's role as Arjuna on the governance battlefield, guided by Gita's four important things, five rather, five very important things I'm just trying to take here now. Swadharma. Swadharma is right duty according to one's natural nature and role. Swadharma is that. That is CA's statutory public trust duty is not equal to client favor duty. Swadharma. That is, we are not for client favoring. Even if you can, even if you can take the first page of ICI Code of Conduct, first page of ICI Code of Conduct, on which we have all promised and taken an oath that it says society first and then personal. So that is what Swadharma. Bhagavad Gita's first lesson talks about Swadharma. Nishkama Karma. Act fully without attachment to result or fear. This is what is called as independence in chartered accountancy. For CA, do right audit work even if you lose a client. Meaning, Nishkama Karma, I am not attached to the good or bad of the client. Swadharma, Nishkama Karma, Sthita Prajna, meaning stable intellect under praise, pressure, and fear. At all these times, I maintain the same stature, that's again independence. I don't move here and there. For CA, the same standard for a small and a big client. I maintain Sthita Prajna. This is also embedded into your ICI Code of Conduct. Loka Sangraha, meaning that act for welfare and order of society. As I said again, CA is to protect depositors, taxpayers, employees, not promoters. Then Daivi Sampat versus Asura Sampat, meaning divine qualities, fearlessness, truth, integrity versus demonic greed and deceit. The daily choices of inner governance style. This is the essence of Bhagavad Gita. And we do have the same essence in our ICAI Code of Conduct also. So this is how it moves on, and we have 13
chapters which I'll be covering one after another with practical insights. So going back, so ICI motto and identity. You all know the kind of tapas we have done to become chartered accountant. I hope everyone understands this, recollects the amount of tapas we have done to become chartered accountant is not just academic. It's not just academic. It is our personal Kurukshetra preparation. And hence, Yayeshu Shupteshu Jagarti. One awake among those who sleep. Awake. Awake is consciousness. The total Bhagavad Gita talks about consciousness. The meaning of consciousness is attributed to Lord Krishna. Krishna is otherwise called as consciousness. But it's a human attitude that the moment you spell a name, we attribute to a human being. No, it's not a Krishna is not a human being. It's not a shape. Krishna is consciousness. The meaning of Krishna is consciousness. But some of them attribute Krishna to as a, a peacock feather on the head, a flute in the hand, cows around. No, gopikas around. That's not Krishna. Krishna is consciousness. Let's not attribute the words to a human being or a human structure. Krishna is consciousness. So what is Arjuna? Arjuna is discipline. Arjuna is discipline. So what is that Bhagavad Gita talks about? Bhagavad Gita talks about consciousness and discipline together. And this is explained. Consciousness and discipline is there in a chariot. You know, the Krishna and Arjuna was on the chariot fighting on Kurukshetra. We, the chartered accountants, we, the human beings, our body is chariot. In this, you have Krishna consciousness, discipline of Arjuna, and hence we win the daily war of Kurukshetra. So, Yayeshu Shupteshu Jagrati. Awake is consciousness, meaning we are always conscious about dharmic. How it is, we'll just move on. So Gita Jayanti reminders our signature is the wakefulness I in a sleeping system. Okay. So here and there I have quoted certain Gita slokas here. I'm not that good in reading the Sanskrit. I'm just learning it. Karpanya dosopahat swabhavaha nahi prapasyami. Meaning, when dharma versus relationship clashes, guidance is needed. That is what Arjuna was asking. Like Arjuna, a chartered accountant, stands between loyalty to client, relatives, and friends and loyal to dharma, law, and public. This framework is Krishna's counsel for our profession. So, what is that? What exactly is it? So, as I said, the journey of tapas at 4 years plus of intense study and repeated attempts, family sacrifice, social pressure, all that has given us a chartered accountancy and it's a true identity. We are not just accountants, but we are conscious keepers of national wealth, watch of truth, custodian, guardian of public money. So, universal consciousness framework is what we are trying to move on. So, ethics is not only the law and standards, it is a state of manas, buddhi, ahankar, and chittam influenced by the three gunas. I'll just dwell certain amount of time on these four aspects which makes human being to act. Manas,
Buddhi, Ahankar, and Chittam are the inner part of the soul. It is all one and same, but the way in which it reacts, it takes its character. Like what is Manas? Manas is, it takes the decisions. Buddhi says good or bad. Ahankar is I. Chittam is patterns are recognized. And all is done in the soul. When you wanted to do something, Manas, when you wanted to do something, when your sense of organs sends impulses to the body, then the Manas will react. To do it, then Buddhi says it is good or bad. And all this reacts the moment you say I as Ahankar. And all this functions with Chittam. Chittam is the patterns. Good and bad patterns are recognized in the mind. And the moment organs senses sends to this, then the Buddhi reacts. But of course, Manas and Buddhi is what always fights. It says do, Buddhi says no, should not do it. And this is influenced by the three gunas: Sattva, Rajas, Tamas. What is Sattva is clarity, Rajas is greed, Tamas is ignorance. So we'll have a role play in this at the end of the session. At the end of the session, we'll have a role play wherein I'll just give this. I'll share this to you at the end. Then you can fill it. Once you fill this, then you will understand how you are reacting to the situations and how do you need to control for a better professional behavior. I'll share this. I'll share this with a QR code so that you can download this content. Once you download this content, I'll just explain to you as to how you need to fill this. And once you fill this, how it calculates the heat map or the indicator will try to work out. But now let's move on to this. Yeah. So what this Gita says here is Sattvat sanjayate jnanam rajaso labhaye vacha. Meaning, sattvam is clarity, rajas is greed, and then tamas leads to the ignorance. It talks about the three stages, the three gunas, which is sattva, rajas, and tamo, which is influencing this. And once this influences, you start behaving it. And that behavior can be good or bad based on this. Meaning, the cause and effect of human behavior is between manas, buddhi, ahankar, and chit, and sattva, rajas, tamogun. Whether you like it or not. We'll just see as we go in. The same Companies Act, the same standards, but a tamasic mind signs a fraud. Same Companies Act and same standards. But once I sign a fraud, then I am tamas. Once I mind detect and report, then I am sattvic. The law is the same, but the gunas are different. Okay. So the three states of gunas which I was explaining it, after this we'll move into the practical case studies. Three states and gunas. The deep sleep is tamas, negligence and deliberate blindness. Deliberately. That is what our elders also say. A person who is sleeping, you can awaken. But a person who is acting that is sleeping, you can never awaken him. Meaning he is already into negligence, into deliberate blindness. That is tamas. And with tamas, we sign this dreaming, that is rajas, rationalization, all do it. All of them are doing it.
Everyone is doing this. Everyone is money making with an unethical manner. So what? How does it make it different? The client comes and tells, see, that company is doing it. They were not punished. Why are you not signing this? Rajas, awaken, Yayeshu Shupteshu, awaken sattva, clarity, alignment with dharma. So, witness is thuriam, pure awareness, ego transcended is what Yayeshu Shupteshu Jagarti. Jagarti is thuriya. So, the inner instruments are manas, attention and information processing is manas. How is this information is processed through the sense of organs? It is manas. And the moment sense of organ says that I get a very good smell of a sweet or a biryani, then buddhi says it's not time to eat. It's not good to have. Ahankar, the moment whomever I am serving, the moment I get I realize, then these two will automatically get activated. As long as I am not saying I, then these two are silent. So this gives rise to these two things. And the manas acts based on the memory and conscious, concise impressions that it has stored ages together, not even ages together. Millions of years of experiences are stored in us. Millions of years of experiences. And that is what you all know. That's what you all know that I'll just say that like, can you see the number of neurons in mind? Number of neurons in brain is 86 billions of neurons. These neurons vast network with an estimated 100 trillion connections in the mind, in the brain. And all these things are impacting our chittam. Okay, what controls all these things is breathing. I'll come back to this when we talk about breathing patterns, which controls our emotions. The emotions are based on information processing. The emotions are based on rajas. Our client says, hey, do it. That client has done it. You do it. I'll give you 5%, 2%, 1 lakh, 10 lakhs. You do it. Manas, interaction of it. But what stops all these? We'll discuss that. Okay. Before we go into that, let us see certain examples. Let's see certain examples, and then we'll move on into our discussion. What it is talking here is you have CA's role sits within the constitution and statutes. What Gita says is yat acharati sreshtas tat yavataro janaha sayat pramanam kurute, meaning what leaders do, other follows. What leaders do, other follows. Who is a leader? Is the other client or the other chartered accountant who has allowed 5 lakh crores of banking fraud? Is he a leader? If I treat him as a leader, I follow a bad path. If I take Ram as a leader, Krishna as leader, I take a different stand together. If I take Ravana as Kamsa as leader, then I take a different route. So yat acharati sreshtas, whoever sreshtas, the leader I mean here is sreshta, good. The others needs to follow it. So a CA conducts influence ललित बेकार है, banks. शांग्रीला के कंपेयर में तो तीनों ही बेकार है। शांग्रीला सही में मानना पड़ेगा। क्या होता है शांग्रीला कैसा भी हो, आपको घर लग गया ना अभी यार।
Yeah. Okay, there was a crosstalk. So ACS conduct influence promoters, bankers like Arjuna on the battlefield. Our professional choices shape loka sangraha, social order. So the articles give us to do it. But now comes the professional crisis. Comes here the professional crisis at the tapas paradox. After years of tapas, why do some CAs still compromise? The paradox is not lack of knowledge, but the gap between inner confusion and outer pressure. This is a gap which is making them to carry out. So what are we talking about? You know, in the recent past, there were 5 lakh crores of banking fraud and 60,000 crores of GST fraud, wherein a minimum of 500 chartered accountants were involved in all these processes. And because of this 500, which are less than 1% of the 5 lakh chartered accountants, the total profession has got a bad name. And immediately the government has moved into from detective to preventive mode. So how detection is taking place today with technology is what I would like to cover today, and then move on to this presentation. So what I've done is I've simulated certain case studies using Python. Let me demonstrate what I'm trying to do here. I load the CSV files. These CSV files belong to a chemical company. Let me give the story of this chemical company. This chemical company in the recent past in Hyderabad, in the name of chemical industry, it is doing narcotic drug business. For the public, it looks like chemical industry. Back end, they process heavy narcotic drugs. And near about some 100 to 200 crores were caught in this. This is not the only company in India which is doing this. Several other companies are also involved into this process in the past. And these were, sorry to say, these were audited by the chartered accountant, internal audited by the chartered accountant. Bank funding was organized by the chartered accountants, knowingly or unknowingly. We are not sure. Be that as it is. But what I am trying to show here is taking the bank statements data, customer master, e-way bill data, export data, power consumption, production batches, purchase of inventory, purchase invoices data, tolls, GPS toll data, vendor master data, warehouse stock data, all these CSV files taken together, taken together and added to a system, added to an investigating processing tool, loaded all. You can just see certain debit, credit and all, term loan, export proceeds, cash deposit. Like this, customer master. I'm just saying that customer masters here. Is this a group entity? Let me just make, these are all group entities. E-way bills, export data, power consumption at different times, meter, different times, production data, purchase invoice data, toll gate data. All this is taken and then loaded it
Once it is loaded, then the analysis part of it. The moment it is loaded, you can just see here. Total batches, ghost batches are there. Exports, round trips out of the exports, it is only for the sake of exports, but again come back as imports. There are 28% of. Then, in the same way, logistic anomalies, missing toll gate records, power consumption anomalies at different times. There is a spike at some part of time during midnight when actually production records were showing that there is no production. Warehouse anomalies, ghost receipts are there which are not actual receipts, meaning that they have a dummy receipts of stated chemical used for the stated purposes, but indirectly those are all, they are all manufacturing drugs with undisclosed receipts. These are all ghost receipt instances. Vendor relationships with 4 shell companies. So now the investigation report is talking about. The moment data is loaded today, the moment data is loaded, the system, what we have seen now, has automatically classified, detected 444 price anomalies, detected 4 shell companies. Let me just show you all those. These are how placement money laundering they have done is. Layering, how layering is done. How integration is done. What are the Indian Penal Code customs violations they have done. In this way, all these anomalies and reports are automatic now. False documentation, PMLA offenses, and so on, whatnot. What are we talking about? The point what I am trying to highlight here is when in the internal audit process or in the external audit process, and there was regular stock audits being conducted for this borrower, and nothing never has come out, and suddenly in a small when the moment all these files which were taken from the records, a small algorithm is run, then it has detected so much of violations. If this is a case, what are we trying to say here? So first company happens when a fear of losing a client becomes stronger than the piece of right action. Meaning, what made me to do all this? Is this not the cause and effect? Is this not the cause and effect which made me to commit, which made the chartered accountants involved in this to commit a crime? So a small tool is able to today do it. A small tool could able to do this. Then what happened to my standards, analytical procedures of SA 520? I go back again. Is it not the pressure which made me to commit this? The manas, buddhi and ahankar and chittam got blinded with tamas, and I have lost clarity. I was not awakened. Yayeshu shupteshu jagarti. Always I should be awakened. Always awaken is what is professional skepticism, which was missing in this. And unfortunately, the chartered accountant was penalized in this. Further,
Say today, detective to preventive, we are talking about detective to preventive. I could not detect, but today the systems are there, working always in coordination. Let me just show you. I'll just upload the bank transactions. I'm uploading the bank transactions, UPIs and all. I'm uploading the invoice data. I'm uploading the communication files. Communication files is my WhatsApp communication, my email communication with so many parties. The client's data of crypto data uploaded. Employee profile and director's profile is again uploaded to it. The system is able to track when, where, how the system, how the money has passed, where it has landed. Load the data. I've loaded it. Now it is giving a data diagram as to how the funds have moved. So I can preview. These are transactions, invoices, communication profile, and crypto. Now I'll just take this transaction ID, some of the random transaction ID, and we can see. I'll come back to the transaction. Now you can see it has flagged these transactions. Who is the payer and payee? There is failed transaction disrupted into this. This is a split. Odd hours, weekends, invoice total mismatch. Meaning these are all machine learnings, red flags, red flag. I can drill down to the data to a particular transaction where it has gone. This transaction is Swift money, where it has gone. It is shift to a shell company. And this transaction is linked to an invoice of a particular chemical which is actually not used, and so on. And forensic flow. And this is where how the money is flowing into. You'll get a complicated. What I'm trying to show here is today the detective mechanism is so powerful. From detection, the systems are now moving towards preventive. The moment a transaction is initiated, the government is able to sense whether the transaction is true or false or fraud. Unfortunate, after 1 year of audit, the auditor of that company says it is true and fair. But by the time the government is already aware that the transaction is true or false, through the data analytics. Through the data analytics, you can just see the complicated movement of funds. A small system in my computer is able to do it. You can think about the powerful systems of government, what it can do about preventive to detective to preventive. Yes. So this is one more example I thought. So what do we need to do? You need to have an investigation checklist again. Okay, I'll just close this. Okay, what we have talked now is on how we are thinking that no one will catch me. If other client is doing, why can't I do it? What is wrong if I start doing with this?
So this is what we have seen here now with inflated island affairs, Nirav Modi kind of cases I have just demonstrated to you. So now what is that ICI under preventive governance mechanism it is doing now? Yogaste Kuru Karmane Sangam Taktva Dhanunjayaha, it is say. Established in yoga, perform our duty, abandoning attachments. Because they are attached, that 5 lakh crores and 60,000 crores of GST fraud has happened in this country. Because they are attached. Now, how ICI is moving into detective preventive mechanisms. CP and certificate courses, the Manas attention, they are trying to update information and red flags. Buddhi, the judgment, sharpen the risk judgments with CP and then certificate courses. Ahankar, that reinforces public trust. Chittam, that stores ethical patterns by learning these. Fraud reduces the ignorance-based failures. Evidence, every certificate is traceable, stops casual signing because we think now, hey, someone is looking at. Ahankaram, reduce ego, hiding signature tagged. Chittam, that is permanent record of truth. Discourages fake certificate culture. QRB and PR peer review boards forces detailed attention. Test of quality, checks independence and integrity, document pattern, improve firm behavior. So let me just demonstrate how you and I can use a small tools like HTML, where you and I can find out the complicated patterns of related parties. Let me just demonstrate. Yeah. Sorry. Right. I'll just share the shell company data into this. I'm loading the shell company data into this. Analyze. Now it is finding out. Now I am using preventive. Before I take up the audit, before I sign, I am using a preventive tool to find out a complicated structures in the company. In this, I have found 9 anomalies, 50 duplicates, 5 out of 589 records. What exactly is this record? Let me just show you once so that you can. Yeah. Okay, just see this company-wise shareholders. Company 1, 2, 3, 4, 5, 6 companies having shareholders. Company 1, 2, 3, 4, 5, 6 having directors. And in all this, there are 500 employees in all these 5 companies put together. In one of the companies, they have all this. Whether there are any intercompany holdings and intercompany people are there in this, I don't know. Directors have not disclosed it. Now, what can I do? I can run a small HTML tool where now you can see it is matched with the PAN number is matched with the shareholder PAN number and employee, and in this way, director's PAN number is matched with an employee company, and so on, and so on.
Now, before I start the audit, I can be vigilant. With these detective mechanisms. Instead, someone detecting me and trying to say that there is a fraud. Before that, I do my detection as a part of analytical procedure. Let me also demonstrate one more case. Yeah. Yeah. Let me also demonstrate one more case study. Yes. Just a moment. So I load a sales file. Right. I can just see that some sales file is loaded here. Now I go back to analyze the data. Now you can find anomalies are detected here. Unusual pricing, and you have unusual quantities, discounts, and so on. In the same way, you have GST compliances, problems with GST compliance, incorrect GST rate, missing GSTN. And you also have income tax related complaints, invalid PAN number, TDS is not deducted on, etc., etc. More than 10 vehicles are there not deducted. And you get all this dashboard. And you don't know how to read these figures, and then you can just try to take an image and give it to take the image and then give it to any. What are we saying here? Preventive to detective to preventive. Top. So I can ask for what are the risks in this. It can. So of course, most of you are aware of it. I'll not go in depth into these aspects. But what are we trying to say? I'm using tools here because the tools are used by the government again. Hence, I'm using these tools. And today I'm using technology for that matter. Yeah. So I said I'll be sharing, before I go to the last part of it, I'll share the QR code. You can download the, yeah. Members may please download the QR code. I'm just holding it for a few seconds. Members may please download the, scan the QR code. You'll get a Google Drive, and in the Google Drive, you have, in the Google Drive, you have these two files. This is a file which I have demonstrated, and this is a file on which you need to use it. So kindly open this file. I'm just again going back to the QR code for your convenience. I'll just stay here for a second. Just staying here for a second.
I think you might have scanned it. I'm just moving on. And this is the file that you need to open it. So what it has? It has, I said, breathing patterns the breathing patterns will talk about your present state of mind. The breathing patterns will decide the present state of mind while you are doing in any activity. Let me just go on to this. So I think you're able to access this. I'll quickly take the other side of example, not the good side of example. I'll take the bad side of example. I'm just clicking the bad side of example. Last. During stressful situations, your breathing becomes completely unconscious. The manas thinking, mind thinking, constantly I'm obsessed with others' successes. Your thoughts about money and success, obsession with would do anything for my wealth. How easily you can focus on single tasks, nearly impossible. Buddhi, discriminative intellect. Ethics feels relatively, everyone is doing it. How do you view shortcuts to success actively? What would you fail at something? Your response is blame others. Professional dharma, that SQC plus code of ethics. Leadership tone of my revenue is my only consideration. Independence, active, do whatever. Acceptance of SQC, accept. HR policies, none higher on the availability. Engagement, minimal, and so on, and so on. I'll select all the bad ones. Now I say calculate dharmic and all. Now it's saying urgent transformation is required in me. Urgent transformation for prana, manas, buddhi. Overall ahankar, antakaranam is 0. Least preferences to the ICI ethical compliances. So what? No leadership, no ethical, no human interactions, nothing. So from this stage, I have to go into detective to preventive mode now. Begin 5 minutes guided pranayam, success with sessions with twice a day. Seek mentors, satsang or trusted guide for dharmic support. Avoid multitasking. So what Gita says is, for him who has conquered the mind is a best friend. I repeat again. Make a note, please. For him who has conquered the mind is a best friend. But for who has failed to do so, his very mind is greatest enemy. What that is what I said here. The conflict is always here. And this conflict is resolved by the buddhi. And this buddhi makes this manas as friend and erases the wrong memory. And that will take us to a best one. How do you breathe? While you inhale, count 4. While you're inhaling, count 4 like 1, 2, 3, 4. Hold it for 4. Hold your breath for 4 minutes. 4. Count 4 while you hold. Exhale while you count 4. Hold again 4. And repeat this for 5 times. This is controlled for a period of time. So this, as I've already shared with you, I don't want to bore by reading it. So from gunas to karma to ICI SQC1 leading it. Stress, doubt and heaviness suggest rajas. Stress, doubt and heaviness in our mind, rajas and tamas dominance. During the return filing time, we express this. We undergo this. This is an urgent invitation for the basic breath work, grounding and honest self-reflection integrated with SQC. You're running short of time, I'm just closing it.
So for the peer reviews again, I'm going back to the last one before we close. Peer review specific deficiencies, no system of allocating work to suitable experienced workers. The moment I select the second one, it is saying, hey, you have a wider implication to the economy. No documentation in my office. Audit file is not assembled in the 60 days. No evidence of review of work. No documentation of SQC. No internal periodic code review in the office. Independence and conflict in the office. Engagement letters are not collected. Planning documentation is absent in the office. No documentation of materiality. Substantive procedures are not linked. Management representations are not taken. Root cause analysis for the observations is not done. No formal plan is done. No engagement letter quality control review is done. Fees from a single client is larger. Significant accounting balances is not done. All this is done. So what? So what is, you can just see now. It is saying SQC maturity score is very weak. Peer review readiness is high risk. Okay. Having said this, before we close, I would like to demonstrate one more project, the way in which the government is working on, and then we'll close this. Yeah. Yeah. It takes few seconds. I beg your patience for a while. Yeah. So what I'm saying here is, say company, today government is working on this, like say company CSV, ETDS files, and so on. All these transactions are preloaded here. And I run the analysis, load it, and you can just see algorithms are running. You can just wait for, I beg your patience for 1-2 seconds. And a report is generated. What this is 5,000 crores worth of black money is getting converted. Now department is not in a detective like Nirav Modi ran away with 14,000 crores 2014, almost 10 years, till the amount is not recovered. Till the amount is not recovered. That is gone are those days. Today, the moment you start thinking of committing a crime, the digital environment is so enabled that it can detect and prevent. Now we are moving from detective to preventive. Now these are the red flags that it has detected. What red flag? Mool claiming presumptive taxation to get a refund. System is able to predict that the amount of refund he is trying to claim under a presumptive is nothing but a group of people playing fools with the government. It's a black money that is transferred to him.
and he's trying to claim it. And in this way, you have all this. Like, say, how many critical risks are there in this? Critical. Now, dashboard is. Out of that 5,000 crores, the number of fraud is property mismatch, structured payment, TDS, profile mismatch, GST evasion, high and low and all. 10 companies were involved in this. Fraudulent TDS payments are there. Risk distribution is high. Network analysis. 1,000 accounts moved and then 842 profiles are matched. How this? 86, 89% of the credits in this particular account were withdrawn in 7 days. Today, I think many of you might have already attended PMLA, AML course. You know that FIU has all this data now. Bankers are supposed to give this data. Mool account data has to be given to the FIU. And FIU is getting integrated to the income tax. And all this is happening today. Detailed reports. You just see 1,000 payments between so and so to avoid GST threshold. 689 payments between avoid GST. Mool claiming refunds. And so many things. All this is with just a small data, small collection of data from different sources put into one place. Now it is no more detective, it is preventive, it is preventive, it is not detective. Hence, the Gita says, Karmanyavadikarasya, do your duty. Do not get attached, do not get entangled into this. Control through the breathing. Good always, good to the society. Thank you very much for your patience, Rasnik. Thank you, sir, for such a nice celebration. Now, I would like to now invite CA Ayush Swani ji to start his topic, which is topic on GST litigation. Before inviting CA Ayush ji, I would like to give a brief introduction about CA Ayush ji. He has completed multiple exams and courses like forensic accounting and fraud detection exam by ICI and has a diploma in information system audit. He has also delivered multiple sessions in internal audit and GST and was also invited by CII, FICCI, government department, etc. for lectures on GST and income tax compliances. Now I would like to invite C. Ayush ji to start this topic on GST litigations. Sir. Thank you so much, first of all, to CP committee for giving me the opportunity of speaking on this very important and pertinent topic, which is GST litigations. As all of us are knowing, uh, time it's been 8 years since GST has come, so it has evolved so much. So it is a very pertinent topic these days. Now GST at tribunals have been set up, and so forth. Appeals are going on, so it is a very pertinent topic these days. So thank you so much, Ribha, for introducing me, for this generous words you have spoken about me. So I'll just share my PPT. Ribha, is it visible? Yes, sir. Okay, and is it visible on a full screen? I hope so. Yes. Okay.
So, GST litigations is a very pertinent topic for not only CAs but anybody who is into it, whether it be tax lawyers or not only on businesses as well. So, will how it GST has evolved. अगर हम देखेंगे from past 8 years, GST ने बहुत ज्यादा evolve किया हुआ है. पहले हमारे पास काफी ज्यादा चीजें जो थी वो नहीं थी. फॉर एग्जाम्पल इन GSTR 3B वर्सेस 2A वर्सेस 2B काफी ज्यादा कंपैरिजंस नहीं हो पाते थे. फिर हमारा GSTR 2B आया. फिर हमारे पास टाइम टू टाइम मंथली हमारे ये जो है GST काउंसिल मीटिंग्स की जैसे जैसे होती है, तो अकॉर्डिंगली हमारा ये जो है अपग्रेड होता रहता है, अपस्किल होता रहता है GST डिपार्टमेंट एंड देयर आई वुड से द पोर्टल आल्सो इज हमारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपस्किल होता है, अपग्रेड होता है. तो वी हैव टू इंश्योर कि हम उसके जो उसमें अपग्रेडेशन आ रही है, अकॉर्डिंगली वी आर आल्सो अपस्किलिंग आवरसेल्व्स और नॉट. सो 8 years ऑफ एवोल्यूशन, कॉन्टिन्यूस अमेंडमेंट्स आ रही हैं, नोटिफिकेशंस आ रही हैं इसमें, एंड डायनामिक लीगल लैंडस्केप दैट डिमांड्स कांस्टेंट विजिलेंस. See, GST practice, if a person is doing GST practice or is specialization or specializing in GST, then the person has to be on toes every day, because so many changes are coming, so many litigations are going on, so many judgments are coming on daily basis, that you have to be abreast with what is latest in the market. On that basis also only you can guide your clients, because अगर जैसे कि रेट्स चेंज हो गए या कोई जजमेंट आ गई, तो आपने अपने क्लाइंट की पुराने हिसाब से रिटर्न भर दी, आपने कोई जैसे ITC नहीं लेना था वो ले लिया, या आपने HSN कोड गलत यूज कर लिया, या फिर रेट ऑफ GST आपने गलत यूज कर दिया, so it can be very detrimental, very consequential, and there can be lot of repercussions for your client. So the persons who are into GST compliances as well as litigations, it is very important for them that they pay very minute heed to what is going on in the market regarding GST law. So there are several interpretational conflicts, as I told you, varying हर एक की definition जो law है उसको legislation ने जो निकाला हुआ legislature ने उसको जो हमारा लॉ कोर्ट्स है, दे आर इंटरप्रेटिंग इट इन अ डिफरेंट वे, वाइल जो प्रोफेशनल है उसको किसी और तरीके से कर रहा है, और जो हमारे ये जो टैक्स अथॉरिटीज है, हमारा GST डिपार्टमेंट है, उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ और ही आ रही है. जो इन सब तीनों के बीच में जो एक टाइप का विरोधाभास हो रहा है, जो एक काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दे आर हैविंग, सो इसी के कारण जो अभी हमें इश्यूज आ रहे हैं, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ that conflicts only. So we need to see ki, what is the intention of legislature behind enacting each and every section. What does legislature actually want? जैसे हम अपने क्लाइंट के हित में या उसके इंटरेस्ट में सोचते हैं और केस लड़ते हैं, अकॉर्डिंगली जो हम GST डिपार्टमेंट है वो भी अपने रेवेन्यू के लिए उसको मद्देनजर रखते हुए अपने केसेस बनाता है, अपने रिकवरी करता है, अपने शो कॉज करता है. तो वी हैव टू इंश्योर दैट कि हम उनका एक ये जो है एक्चुअल जो लेजिस्लेचर ने क्या इंटेंशंस थी, अगर जो लेजिस्लेचर की इंटेंशंस है, अल्टीमेटली इट विल ओनली प्रिवेल. अगर वो टाइमिंग में लोअर लेवल पे क्या कहते हैं प्रॉपर ऑफिसर आपका असेसमेंट करते वक्त आपको चीजें आपको डिसअलाउ भी कर देगा, आपको ये जो टैक्स लाइबिलिटी भी निकाल देगा, इंटरेस्ट निकाल देगा, 74 में कर देगा आपको, अल्टीमेटली द लॉ which is which has been the intention of legislature behind enacting it will prevail. So you have to पहले आपको वो लॉ समझने की जरूरत है, सेक्शन को समझने की जरूरत है, कि जैसे आज का जो हमारा वेबिनार है, इट इज नॉट इनटू असेसमेंट्स, इट इज नॉट इनटू एनी पर्टिकुलर थिंग, या कोई अमेंडमेंट्स आई हैं हम उसको, वी आर कवरिंग कि क्या GST लिटिगेशंस कैसे हो रही है, हाउ इट इज इवॉल्विंग, और हमारे पास ऐसे कौन से टूल्स होने चाहिए, ऐसे कैसे हमारी मंशा होनी चाहिए, हमारा क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए जब हम केसेस के लिटिगेशंस में जाते हैं, जब हम केसेस को प्रेजेंट करते हैं, जब हम केसेस के ड्राफ्ट करते हैं रिप्लाईज, हम जो अपने जो पूरी पेपर बुक बनाते हैं उसमें क्या क्या चीजें वी नीड टू इंश्योर, और कौन कौन से हमें ऐसे होमवर्क करने पड़ेंगे टू इंश्योर कि आवर क्लाइंट गेट्स जस्टिस. ओके,
तो ये बेसिक चीजें और लॉ और ये सब चीजें ना, आप केस वाइज केस, हमारे जैसे कि यूजुअली सीएस में एक ये बोलो कि बुरी आदत होती है कि दे डू नीड बेस्ड स्टडी, उनका कोई केस लगेगा उस सेक्शन में लगेगा, देन दे विल डू स्टडी। दैट इज द प्रॉब्लमैटिक थिंग। इफ वी डू डेली स्टडी, इफ वी डेली कीप ऑन अपस्किलिंग आवरसेल्व्स, वी कीप आवरसेल्व्स अब्रेस्ट विद इनकम टैक्स में जो कर रहे हैं ना, उनको इतना जरूरत नहीं है कि दे मतलब कि वो रेगुलर में, आई एम डूइंग इन इनकम टैक्स एंड जीएसटी बोथ, तो इनकम टैक्स में इतना नहीं, इतने रेगुलर बेसिस पे चेंजेस या लिटिगेशंस नहीं चल रही हैं, या फिर इतने चेंजेस रेगुलरली नहीं आते हैं। बट इफ यू आर इनटू जीएसटी, यू नीड टू इंश्योर कि आप टाइमली बेसिस पे अपने आप को अपस्किल करो, और अपने आप को बिल्कुल जैसे होता है करंट अफेयर्स यूपीएससी वाले पढ़ते हैं, उसी तरीके से आपके लिए ये करंट अफेयर्स आपको, यू हैव टू, मतलब इट शुड बी ऑन टिप्स, then only you can succeed in this field of specialization. So, and this आई वुड से कि हमें अपने कौन कौन से तरीके से क्या क्या चीजें हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए वाइल कोई भी जीएसटी लिटिगेशन आती है, हमें किस तरीके से उसको क्या कहते हैं प्रोसीड करना है, उसको किस तरीके से उसके क्या कहते हैं तैयारी करनी है, एंड किस तरीके से हमारा होमवर्क रहेगा। आई विल बी कवरिंग मोर और लेस एवरीथिंग इन्वॉल्व इन दैट। सो व्हाई जीएसटी लिटिगेशंस अराइज एंड व्हाट आर द की ड्राइवर्स। हम सबको पता है जीएसटी लिटिगेशंस तो हो रही हैं, लेकिन क्या जीएसटी लिटिगेशंस क्यों आ रही है, ये इतना ज्यादा हर चीज जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कितने सारे जैसे कि इनकम टैक्स में भी और जीएसटी में भी इतने सारी चीजें ला रही है, विवाद से विश्वास, यहाँ पे भी वो क्या कहते हैं इतने सारी स्कीम्स लाई हैं जो कि मतलब कि सेटलमेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इतना ज्यादा लाते हैं ताकि लिटिगेशंस कम से कम हो, पब्लिक एक्सचेकर का भी और लोगों का, दोनों का पैसा जो है वो कम से कम फंसे और टाइमली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो जाए, क्योंकि इस सब की देयर इज अ लॉट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व इन इट फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यूज, फ्रॉम योर टैक्स पेयर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज द एसएससी एंड डिपार्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सो द ये अब ये जो लिटिगेशन, ये विरोधाभास आता क्यों है, ये क्यों है, मतलब कि जो इतना ज्यादा कि जो इतनी टेक्निकलिटीज, क्या ऐसी चीजें हैं जिसके कारण लोगों में इतनी लिटिगेशंस बढ़ रही हैं जीएसटी में। फर्स्ट ऑफ ऑल द लेजिस्लेटिव कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे मैंने पहले भी बोला, लेजिस्लेटिव की इंटेंशन क्या थी वो हमें बहुत जरूरी है जानने से। कोई भी अपना जो मूव इसमें करने से पहले, कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले अपने इस केस के रिगार्डिंग, वी नीड टू इंश्योर जो हमें इन्होंने कोई भी एलिगेशन लगा रहे हैं जीएसटी डिपार्टमेंट वाले हमारे क्लाइंट पे, क्या उस चीज में, उस ट्रांजैक्शन में व्हाट वाज द intention of legislation. Dynamic GST provision with frequent amendments create interpretational challenges, and this law continues to evolve through notification, circulars, clarification, making compliance a moving target. See, लॉ जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, कि बहुत ज्यादा डायनामिक है। ये एक स्टैटिक लॉ नहीं है लाइक अदर लॉज जो मतलब कि वंस इन अ ईयर, और मतलब कि या क्वार्टरली या सेमी एनुअली जो जिसपे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये एक तरह डायनामिक लॉ है, इसमें आप मंथ में मतलब दो तीन चीजें तो आ ही जाती हैं इसमें, जो कि बहुत क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट नेचर की होती है। तो क्लासिफिकेशन, एक तो लेजिस्लेटिव कॉम्प्लेक्सिटी, जो सारे के सारे सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन, लॉज जो इवॉल्व हो रहा है, तो एक तो लेजिस्लेटिव के कारण प्रॉब्लम आ रहा है। क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स, हर एक के जो एचएसएन है, जो सप्लाई के रूल्स हैं, टाइम ऑफ सप्लाई के, प्लेस ऑफ सप्लाई के, इतने ज्यादा उसमें डिस्प्यूट्स हैं। डिपार्टमेंट का व्यू कुछ और ही है, एसएससी का कुछ और ही है, प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड कुछ और ही चल रहा है, और लेजिस्लेटिव ने वो चीजें क्या कहते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको दे कुडंट फोर्सी कि क्या हो सकता है ये चीजें, ये क्योंकि एक टोटली न्यू लॉ है, तो ऐसे ऐसी चीजें आ गई हैं जिसको अब टाइमिंग जैसे एज एंड व्हेन बेसिस पे जब जब वो चीजें अराइज हो रही हैं तो उसको एड्रेस किया जा रहा है। तो ये क्लासिफिकेशन में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है। आईटीसी चैलेंजेस, मिसमैचेस, ये तो हमारा सबसे ज्यादा वन ऑफ द आई वुड से, जो मतलब जिसके बाद नॉर्मल जैसे कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो होती हैं, जो मैक्सिमम हम सीएस की होती हैं, तो उसमें जिसके पास भी जो जीएसटी का आए, सबसे ये केस तो किसी न हर एक के पास आया ही होगा कि मतलब आईटीसी के मिसमैच बिटवीन बिटवीन जीएसटी आर 2A एंड बुक्स, आपके 2A और 3B में, 2B और 3B में। तो इसमें इतना ज्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं क्योंकि हमारे हिसाब से या फिर जो टैक्स पेयर के हिसाब से वो
उनके हिसाब से लेजिस्लेटिव की जो रूल्स हैं फॉर अवेलिंग द क्रेडिट, दैट आर समथिंग एल्स। वो जो डिपार्टमेंट है वो कहता है वो 17 सेक्शन 5 में ब्लॉक्ड है, सेक्शन 16 में आप नहीं ले सकते। तो उसी चीजों के कारण जो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसके कारण ये लिटिगेशन अराइज होती है। प्रोसीजरल इश्यूज, डॉक्यूमेंटेशन गैप, लेट फाइलिंग्स, और काफी सारी चीजें प्रोसीजरल, ई वे बिल, ई इनवॉइसिंग, देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो प्रोसीजर्स इतने ज्यादा क्या कहते हैं इन्होंने डिफिकल्ट कर दिए हुए हैं। और विद एवरी न्यू आई वुड से मंथ, एवरी पासिंग डे कोई ना कोई वो ऐसी अमेंडमेंट ले आते हैं विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द टैक्स पेयर टू कंप्लाई। और एक बार एक नई नई चीजें, और उससे उसकी नॉट ओनली उसकी कंप्लायंस में प्रॉब्लम आ रहा है और उसको ये जो है अपने चीजें फुलफिल करने में, लॉ को कंप्लाई करने में फुलफिल हो रहा है, बट इट इज ऑल्सो वेरी कॉस्ट कंज्यूमिंग फॉर हिम, क्योंकि उसके हर एक चीज के उसको जिसको पहले कम क्या कहते हैं अकाउंटेंट्स या फिर टैक्स प्रोफेशनल्स या फिर अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स में से जिसका काम चल जाता था, नाउ ही हैज टू उसको मतलब दो तीन बंदे, एक तो जीएसटी के लिए जो इनवॉइसिंग, ई वे बिल, इस सब के लिए तो अलग से जो भी बड़ी एंटिटीज हैं उनको अलग से और काफी रखना पड़ा है। तो इट हैज बिकम अ वेरी cost involving process for the taxpayer. सो अब इसमें कौन कौन सी लैंडमार्क जजमेंट्स आई हुई हैं? तो सबसे आई वुड से एआर मिक्स सप्लाई की रूलिंग है, रेट्रोस्पेक्टिव, और इसमें जो हमारा हाई कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं, क्लैरिफिकेशंस आई हुई है। तो मेजरली मैं जो इसमें जिन चीजों पे आई है वो एक तो आपको पता है सनक्राफ्ट की है, और आपकी जो सफारी रिट्रीट की है, जिसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, कोर्ट ने क्या बोला कि आपको जो मॉल्स में है, लेकिन आनंद थिएटर में पहले उन्होंने उस चीज को डिसअलाउ कर दिया हुआ था ये, लेकिन उन्होंने जब सफारी रिट्रीट का किया तो उन्होंने जो उसमें जितने भी एस्केलेटर्स वगैरह थे मॉल्स में थे और उनमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसको अलाउ कर दिया। बट गवर्नमेंट ने इसका रेट्रोस्पेक्टिवली इसको क्या कहते हैं डिसअलाउ कर दिया हुआ है। तो वही हम देख रहे हैं कि एवर विद एवरी पासिंग डे, डिपेंडिंग ऑन योर केस टू केस, ये चीजें चेंज होती जाती हैं। तो वी हैव टू इंश्योर कि हम ये जो है इसमें स्पेसिफिक केस लॉज में उसको काफी क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस दे, और उसको रेगुलरली स्टडी करते रहे। मेरी दूसरी स्लाइड में स्पेसिफिक केस लॉज आई हैव कवर्ड, तो हम उसमें टेकअप कर लेंगे। तो जीएसटी लिटिगेशंस का प्रोसेस क्या है? तो जैसे कुछ न्यू प्रैक्टिशनर्स भी होंगे या फिर कुछ लोग होंगे जो कि इनकम टैक्स में करते हैं, जीएसटी में उनका इतना अभी वो नहीं है, जो आज हमारे ऑडियंस होंगे, तो उनको जस्ट एक क्या कहते हैं बर्ड्स आई व्यू देने के लिए सबसे पहले हमारा शो कॉज नोटिस वगैरह होता है, जिससे लिटिगेशन प्रोसेस ट्रिगर होती है। या तो हमारी प्रोसीडिंग्स अगर ड्रॉप हो जाए, क्वैश हो जाए और टेक्निकल और हमारे रिप्लाईज के बेसिस पे, देन इट इज ओके। अदरवाइज शो कॉज इज इशूड बाय द प्रॉपर ऑफिसर विच ट्रिगर्स अ लिटिगेशन। उसके बाद हमारा एडजुडिकेशन एंड हियरिंग होता है। देन जो द ऑफिसर कंडक्ट्स एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स, जो शो कॉज में जो आपके ऑफिसर ने, जैसे एसटीओ ने, सीटीओ ने, या आपके जो भी असिस्टेंट कमिश्नर ने जो आपका शो कॉज दिया होगा, उसको एक ये हायर लेवल ऑफिसर उसको देखता है कि जो जो चीजें के उसने एलिगेशंस लगाए हैं और जो चीजें हमने क्लेम की है, और आर दीज इन टैंडम, एंड उसके जो भी क्या कहते हैं लीगल आई वुड से फैक्ट्स, फिगर्स, और उसकी क्या कहते हैं लीगैलिटी को कंसिडर करते हुए वो एडजुडिकेशन करता है। उसमें पीएच की एक अपॉर्चुनिटी देता है, पर्सनल हियरिंग की। तो फिर जाके उसमें वो अपना ऑर्डर पास करता है। आफ्टर पासिंग ऑफ ऑर्डर हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है, हम अपील्स में, यहाँ पे जैसे जॉइंट कमिश्नर अपील्स होते हैं उनके पास अपील कर सकते हैं। और बट अपील हैज टू बी डन विद प्री डिपॉजिट। अर्लियर हमारा इशू क्या था, वो गवर्नमेंट ने डिसअलाउ किया हुआ था कि आप जो प्री डिपॉजिट है उसको आईटीसी के थ्रू नहीं दे सकते, आप यू हैव टू यूज कैश लेजर वाइल doing going for appeal for paying the pre-deposit, but now it has been allowed by the government। आप कैश डिपॉजिट ये जो कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंटेशन एंड एविडेंस, इसमें अपील जब यहां तक हो जाएगी, फिर आपके अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास आपके पास ऑप्शन होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में जाने में। वहां पे आप ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ है अगर,
तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। जो आपकी फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है ना, वो आपकी डिपार्टमेंट तक, जो आपका ये अपील्स तक होती है, यहाँ तक या फैक्ट फाइंडिंग और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स में जा सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट लेके आप उस पे नहीं जा सकते, ये जो है आपका कोर्ट्स में। दैट कैन ओनली बी गॉन इन केस ऑफ देयर इज अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। बेस्ट प्रैक्टिसेस लिटिगेशन मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी रहती है? अर्ली कंसल्टेशन करो। आपके क्लाइंट को ये होना चाहिए, या अगर अकाउंटेंट्स आर फाइलिंग, कि उनको टाइमली बेसिस पे दे हैव टू कंसल्ट गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज डूइंग इट। या फिर अगर सीएस हैं जो इस चीज में लिटिगेशन में नहीं जिनका फोरे होता, वो उनके जो टाउन में या फिर सिटी में जो भी एक्सपर्ट है इस फील्ड में, दे कैन कंसल्ट देम, उनसे एक ओपिनियन ले सकते हैं कि ऐसे ऐसे केसेस आए हैं, इसमें आपका क्या इसमें ओपिनियन है। तो मेटिकुलस रिकॉर्ड कीपिंग, जीएसटी में ये इंश्योर, जीएसटी में लिटिगेशंस को फेस करने के लिए एक चीज बहुत ज्यादा, एक टूल बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रहा है सभी टैक्स पेयर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, वो है कि प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग। हमने देखा है काफी ज्यादा पुराने टाइम का, जैसे जीएसटीआर की रिटर्न्स वेबसाइट से खत्म हो जा रही हैं, या फिर कुछ वेबसाइट इज, मतलब कि कितनी बार टेक्निकल इशू आता है, डेटा वो चेंज हो जाता है, कितनी बार अपील की डेट होती है, अपील की डेट ही आगे की दिखाना स्टार्ट कर देता है, और जैसे वो लिमिटेशन पीरियड होता है, लिमिटेशन पीरियड में गलती है। तो आपने जब प्रॉपर रिकॉर्ड रखा होगा, एंड रिकॉर्ड कीपिंग नॉट ओनली द रिगार्डिंग डिपार्टमेंटल थिंग्स, आपने अपने जैसे मैक्सिमम जैसे 17 18 18 19 17 18 18 19 फाइनेंशियल ईयर्स के जो केसेस लगे थे 18 19 में, जहां पे अगर आपके पास इनवॉइसेस थे और वहां पे ये गवर्नमेंट हैज एग्रीड की उस टाइम पे टैक्स बेस को इतनी नॉलेज नहीं थी, और आईटीसी उनका जैसे वहां पे जीएसटीआर 2A में नहीं आया, लेकिन उन्होंने क्लेम कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइसेस। तो जिन लोगों ने मेटिकुलस रिकॉर्ड कीपिंग की थी, प्रॉपर इनवॉइसेस मेंटेन किए थे, प्रॉपर ट्रांजैक्शंस का उनके पास रिकॉर्ड थे, बैंक स्टेटमेंट में थे, प्रॉपर लेजर्स बनाए हुए थे, प्रॉपर उनका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डेटा था, तो दे क्लियरली हैड एन एज, और उनको आराम से इसमें लिटिगेशन में रिलीफ मिल गया। तो वी जीएसटी लॉ में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका रिकॉर्ड कीपिंग शुड बी A1। आपको प्रॉपर अपने फिजिकल रिकॉर्ड, आजकल तो आई सजेस्ट ऑल माय क्लाइंट्स एंड ऑल द ऑडियंसेस वेर एवर आई गो, कि दे शुड इंश्योर। अब अपना पायलट बेसिस पे क्या कर सकते हैं, आपका जो जीएसटी का रिकॉर्ड है, या फिर इंपॉर्टेंट इनवॉइसेस लेजर्स वगैरह है, उसको गूगल ड्राइव, क्लाउड बेसिस, और बहुत सारे हैं, गूगल ड्राइव है, ड्रॉपबॉक्स है, वेरियस क्लाउड कंपनीज हैव कम इनटू प्ले। तो आजकल तो इंडियन बेस्ड सेवरल कंपनीज आर देयर, सो जोहो इज देयर। तो जोहो को जैसे गवर्नमेंट इज आल्सो प्रमोटिंग जोहो, तो यू कैन अवेल सर्विसेज ऑफ सच कंपनीज, और ये आपको बाद में बहुत ज्यादा आपके लिए क्या कहते हैं, इट विल कम टू योर रेस्क्यू। एंड नॉट ओनली एक आप ऑनलाइन क्लाउड पे रखो, एक प्लीज, सब मेरे ख्याल से मैक्सिमम सीएस के पास एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, वेदर इट बी यूएसबीज और योर हार्ड डिस्क। तो कोई अच्छी हार्ड डिस्क आप लेके इसमें अपना रिकॉर्ड का एक आपके पास बैकअप होना चाहिए, क्योंकि अगर क्लाउड भी फिजिकल, तो वैसे भी इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेंटेन, लेकिन अगर जो आपका ये जो सॉफ्ट कॉपीज हैं, दे शुड आल्सो बी मेंटेन इन प्रॉपर मैनर। तो प्रोएक्टिव रिकंसिलेशन, रेगुलर रिकंसिलेशन ऑफ जीएसटीआर टू बी विद आईटीसी क्लेम्ड प्रिवेंट्स मिसमैचेस, मंथली रिव्यूज आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व सप्लायर कंप्लायंसेस अर्लियर। क्या रहता है कि जो भी आपकी रिकंसिलेशन है, ये लास्ट मोमेंट पे नहीं होनी चाहिए, जब आपको केस का नोटिस आ गया हुआ है, या आपको जब कोई ना कोई शो कॉज आ गया है, या आपको जब जीएसटी डिपार्टमेंट ने बुला लिया है। ये आपको रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आपको खुद ही रिकंसिलेशन करते रहना चाहिए ऑफ जीएसटीआर 2A वर्सेस 2B वर्सेस योर 3B, in which you are filing return versus what in your books and invoices you have। तो ये आपको रेगुलर बेसिस पे होगा, तब ये आपको आगे जाके लिटिगेशंस में ये इशू आएगा ही नहीं बिल्कुल भी। एंड योर लिटिगेशन, और कोई आपको जीएसटी सेक्शन 65 वाला ऑडिट भी आता है, सेक्शन 66 वाला स्पेशल ऑडिट आता है, तो आपके लिए इट विल बी अ केक वॉक वहां पे। लेकिन बट इफ यू आर नॉट compliant, if you not get proper record, if you are not proactively reconciled on regular basis, then it will be a big issue for you, because the things will get accumulated। यहाँ पे इंटरेस्ट 18% पर एनम पे आपको लगता जाएगा,
बाद में आपको अगर 74 की प्रोसीडिंग्स होगी तो देन यू ऑल नो कि उसमें कितना ज्यादा हार्श प्रोविजंस है और कितनी ज्यादा इंटरेस्ट और पेनल्टीज लगती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइमली बेसिस पे इसको फॉलो करें, ताकि reconciliations everything is reconciled, and there is no scope for any kind of discrepancies and differences. Expert advisory, this I've already covered. So emerging trends, what are the emerging trends in GST which you need to know of? And mostly most of you also might be knowing it. So GST Appellate Tribunal has become operational. Many cases are now going to it, and many I've observed many people getting genuine relief from it. Technology integration. अब इसमें not only department is using AI based data analytics and several softwares, but now for customers, for taxpayers, for the professionals, there are so many AI based data analytics software, so many accounting based software, and even the existing softwares, they've also embedded GST reconciliation and GST tools, so as to ensure proper reconciliation हो पाए, proper guidance दे पाए, proper I would say compliance हो पाए. So national litigation policy, government time to time has ensured कि जितनी कम से कम litigation हो सके, they are compounding के विवाद से विश्वास के सबका विश्वास स्कीम, तो इतनी सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने निकाली हुई हैं टू इंश्योर कि ये जो भी हमारी जो ये पेंडेंसी है लिटिगेशंस की, इट इज टाइमली फिनिश्ड, एंड जो जेन्युइन रिलीफ है किसी का भी उसको उनको मिल जाए. सीएस एक्सपैंडिंग, नो तो द सीएस जीएसटी आने के बाद तो सीए ने वैसे ही इस एक्ट में टोटली टेक ओवर कर लिया, एंड दे आर वर्किंग वेरी आई वुड से एग्रेसिवली, एंड वन ऑफ द बेस्ट आई वुड से जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं, जितने भी इवन जो टैक्स लॉयर्स भी हैं, दे आर आल्सो सीएस, दे हैव सरेंडर्ड देयर सीओपीज एंड दे आर नाउ working as tax advocates for various litigations. So CS ka role is unending, and I would say the kind of expertise, hard work, and determination they bring to table is the only reason that why they are excelling so much in this field. प्रैक्टिकल टिप्स फॉर बिजनेसेस एंड सीए, जैसे मैंने वही बोला कि मेन लिटिगेशन टू लिटिगेशन हर चीज क्या कहते हैं डिफर करती है, सारी चीजें, जैसे आप कैसे कौन से सेक्शंस को यूज करोगे, कौन से केस लॉस को यूज करोगे, इट विल डिफर अकॉर्डिंग टू योर सेक्शन, अकॉर्डिंग टू योर केस टू केस, बट सर्टन थिंग्स they are perpetual, they are common, and they are like they should be upon your sleeves, which are what kind of अंडरस्टैंडिंग यू हैविंग. जैसे कि इसमें कौन कौन से ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स है फॉर बिजनेसेस एंड सीएस, एंड स्पेशली फॉर प्रोफेशनल्स जो इसमें करते हैं, दे शुड हैव डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीएसटी लॉ. जीएसटी लॉ को रेगुलरली आपकी, इवन हमारे आईसीएआई ने, जीएसटी कमिटी ने जीएसटी कोर्स, सर्टिफिकेशन कोर्स जीएसटी में कराया हुआ है. अब ऑल्सो मतलब कि पहले तो हम लोगों ने पढ़ाई था, ऑल्सो इसमें एक रिकैप करने के लिए बहुत अच्छी फैकल्टीज हैं इंस्टीट्यूट की. तो आई सजेस्ट एवरीवन कि इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेशन कोर्स ऑन जीएसटी आपको जरूर करना चाहिए. आपको सारे के सारे सेक्शंस, जितने भी केस लॉज है, सब कुछ आपको एक टाइप का रिकैप्चुलेट हो जाएगा, और इट विल बी टोटली वर्थ इट फॉर यू. So you should have deep understanding of GST. You should know each and every provision, and not only need-based study, but you should actually do thorough study. Stay updated, monitor amendments, circulars, advanced rulings, judicial decisions regularly. Subscribe to reliable tax updates and attend professional seminars. So इनमें से एक चीज तो आप अभी कर ही रहे हैं, जो आप प्रोफेशनल वेबिनार्स वगैरह कर रहे हैं. सो ये आपको बस एक तरीके का रीआइटरेट करता है कि टुवर्ड्स योर डेडिकेशन टू व्हाट द वर्क यू आर डूइंग, है ना. तो जैसे एज प्रोफेशनल्स, सिंस हमारे दिस इज अ थिंग दैट वी नीड टू बी अपडेटेड विद, हमें इंश्योर करना है कि जितनी भी अमेंडमेंट्स हो, सर्कुलर्स हैं, एडवांस रूलिंग्स हैं, जुडिशियल डिसीजंस हैं, वी आर abreast with everything what is going on in market, and so that we can guide and help and consult our clients accordingly. So you should also subscribe to relevant and reliable tax updates, tax manuals, uh,
your newsletters, और काफी सारी ऐसी चीजें हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, योर टैक्स पोर्टल, वेब पोर्टल्स हैं, लाइक टैक्स गुरु है, टैक्समैन का है, सीटीआर का है। दे आर सो मेनी एन नंबर ऑफ, और बहुत ही रेलिवेंट है, बहुत रिलायबल है। उधर डेली बेसिस पे आपको केस लॉज आ जाते हैं, केस लॉज का पूरा राइटअप आपको मिल जाता है, सर्कुलर्स मिल जाते हैं। तो यू शुड, जीएसटी की साइट्स तो that is your bible. You have to timely go on and read it. But there are several other sources also, private sources, which you should refer to, because they have prepared such good compilations on what kind of I would say updates are coming in the market. So it is must for you that you should go and subscribe to these things. So compliance automation, implement GST compliance software, automated reconciliation tools. Technology minimizes human errors and ensures timely compliance. So it is very important कि आप timely compilation के लिए ना, और आपकी compliances करने के लिए आप क्या करें कि कोई बड़े सारे सॉफ्टवेयर आते हैं आजकल, जैसे कि आप देखिए कंप्यूटेक्स का है, यहाँ पे आपका स्मार्ट एक्स के हैं, काफी सारे मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स जो आपको कंप्लायंस की ऑटोमेटेड, आपको क्या कहते हैं, रिकंसिलेशंस करने में हेल्प करते हैं, जो कि आपको अलर्ट्स देते हैं। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे इंस्टीट्यूट का ये जो है अभी फैब में प्रोग्राम हो रहा है, वोफा, उसमें इंस्टीट्यूट इनवाइट्स ऑल दीज वेरियस टेक्नोलॉजी कंपनीज विच आर मेकिंग वंडरफुल सॉफ्टवेयर, मतलब एआई बेस्ड, और बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको रिकंसिलेशन में और आपकी ह्यूमन एरर को टोटली मिनिमाइज करने में आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो यू शुड कम टू सच इवेंट्स। ना केवल आपको इसमें आपको प्रोफेशनल अपडेशन मिलती है, आपको सेमिनार्स वगैरह अटेंड करने से ये जो है, ये सेमिनार में आपको नॉलेज एनहांस होती है, बट देयर सेवरल सॉफ्टवेयर्स, आपका जो एक्सपोजर है टू व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट, यू गेट टू नो अबाउट इट। सो I would suggest, as a part of the tools and habits that we are understanding to stay updated and staying relevant in the market, one of them is attending institutes several events. तो इंस्टीट्यूट के इवेंट में दे हैव डन सो, खासकर जो नेशनल इवेंट्स है, दे आर सो वेल क्यूरेटेड, दे हैव डन वंडरफुल जॉब। मैं आई हैव अटेंडेड all the wofas and everything the institute has organized lately. So और I'll tell you कि आप कुछ ना कुछ उसमें से लेके जाएंगे ही जाएंगे। आपको कुछ ना कुछ, आपको एक कोई ना कोई वैल्यू एडिशन, कोई ना कुछ एक्सपोजर ऐसा मिलेगा, एंड यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। सो आई वुड tell all of you to you please register for WOFA. It will be a very good experience for all of you. So pre-litigation settlement, explore voluntary disclosure settlement options। जैसे ही हमने सबका विश्वास स्कीम बोली, तो ऐसे काफी सारे टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो है स्कीम्स लाते हैं, तो you can avail those schemes and ensure that timely आपका जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो जाए। टर्निंग लिटिगेशन चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज, तो यू शुड हैव अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच। आपको अपना जो अप्रोच है वो एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच रखनी है। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स लिटिगेशन भी कैन बी रिजॉल्व्ड इजीली। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू, अब कोई आ गया डायरेक्टली, किसी ने आपको कोई नोटिस इशू कर दिया और उसमें बोला कि मुझे ये सारा कुछ प्रोवाइड कर दो, तो आपने ब्लेटेंटली ऐसे ही सारा कुछ प्रोवाइड नहीं कर देना। यू हैव टू डू एप्लीकेशन ऑफ योर माइंड। यू हैव टू see what all things I need to give and what all things I don't need to give, because ऐसी कोई आप चीज ना दे दो जो आगे जाके आप am I audible? Hello?
Hello, am I audible? Yes, sir. हाँ sir. Yes, sir. I'm audible now? Okay, okay. I think so. There was some loss of network. Let's share the slide again. So government also acts like a catalyst for such kind of government भी जब डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर के बीच में जो सेवरल ये जो है इश्यूज हो रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑल्सो शुड कम फॉरवर्ड एंड एक्ट लाइक अ कैटलिस्ट एंड इंश्योर कि ये जो इश्यूज हैं ये रिजॉल्व हो. अब कॉन्स्टिट्यूशनल सेव गार्ड्स हम टाइम टू टाइम ये तो बोलते हैं कि जीएसटी के जो भी अपने क्या कहते हैं रिप्लाईज देते हैं अपने जो कंसर्न उसमें एप्लीकेबल सेक्शन होगी या फिर जो केस लॉ होगा उसको मेंशन करते हैं बट वी शुड इंश्योर कि हम कॉन्स्टिट्यूशन का भी टाइम टू टाइम रेफरेंस दें क्योंकि ऑल्दो नीचे लेवल पे ये इतना वैलिड नहीं होगा और नीचे लेवल पे उसको इतनी इंपॉर्टेंस देंगे बट आगे जाके जैसे आप अपील स्टेजेस पे जाते हैं फिर आप ट्रिब्यूनल में जाते हैं कोर्ट्स में जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को नोटिस की और कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऐसी कोई चीज ना उन्होंने कर दी हो जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उसमें आपको बहुत ज्यादा लेवरेज मिलेगा तो इंश्योर कीजिए जब भी आप रिप्लाई बनाते हैं ना जैसे हमने पहले कवर किया जो रेलेवेंट सेक्शन को आपने कोट करना है उसमें जो कौन सा रेलेवेंट केस लॉ फिट होता है मिसफिट केस लॉ कभी मत करना क्योंकि उसमें फिर आपके लिए और खासकर ये चैट जीपीटी के केस लॉज जो हैं ये बहुत बेकार होते हैं. प्लीज आप लोग जो भी केस लॉ करते हो अगर चैट जीपीटी से किया भी है ना तो उसको बोलो कि मुझे उसका डॉक्यूमेंट जो है पूरा वो दो. मैंने काफी सारे मेरे जो है फ्रेंड्स को ये करते हुए दिखाया हुआ है उसमें उनको आगे जाके जो ऑफिसर होता है वो पूछता है कि इसके पूरा केस जो आपने केस लॉ मेंशन किया हुआ है इसका पूरा डॉक्यूमेंट मुझे पूरा ऑर्डर दे दो तो देन वो उसमें सर्च करते हैं वो चैट जीपीटी ने खुद ही बना दिया होता है. तो प्लीज इंश्योर कि जहां से भी ऐसी जो रिलायबल साइट्स लाइक टैक्समैन सीटीआर वगैरह वहां से केस लॉज देखिए वहां से आपको प्रॉपर केस लॉ की पूरा समरी भी मिल जाती है और आपको डाउनलोड भी हो जाते हैं अगर आपने सब्सक्रिप्शन लेकर रखी हुई या फिर टैक्स ग्रुप वगैरह में तो फ्री में होते हैं काफी सारी फ्री वेबसाइट्स भी हैं तो आप उन जगहों पे भी रेफर कर सकते हैं. तो लेकिन प्लीज ये जो एआई से एक शॉर्टकट लोग सोचते हैं कि हम मेरा पूरा इसी से बन जाए ये मत इंश्योर कीजिए. आपको कवरिंग लेटर वगैरह थोड़ा बहुत बनाना है दैट इज ओके बट डोंट गो फॉर लाइक जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कि बहुत सेंसिटिव चीजें होती हैं और जिसमें सारा का सारा केस रिलाई करता है. अगर आपने ऐसा कोई गलत केस लॉ कर दिया ना और आपको बाद में मांगा ये जो है ऑफिसर ने एंड यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इट और आप ये करते हो तो वो ही ऑल्सो गेट्स टू नो वो डेली बेसिस पे ऐसी चीजों को डील कर रहा है तो उसको पता चल जाता है कि ये इन्होंने एआई पे या फिर किसी पे क्या कहते हैं चैट जीपीटी पे परप्लेक्सिटी पे फिर आपका ये जो है जेमिनाई पे इतने सारे एप्स हैं दे आर आल्सो नोइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स तो यू नीड टू इंश्योर कि ये चीजें आप ना करें और रिलायबल सोर्सेज पे जाएं. सो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 265 है नो टैक्स विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ ऐसा कोई भी हम गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती विच इज नॉट ऑथराइज्ड बाय लॉ. इट मैंडेट्स दैट एनी इम्पोजिशन ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स मस्ट हैव क्लियर लीगल सैंक्शन. जो भी लॉ में जिस चीज पे क्लैरिटी नहीं है जो लॉ में जिस चीज पे प्रॉपर लेजिस्लेशन ने उसको नहीं स्पेसिफाई किया हुआ जीएसटी एक्ट में दे कैन नॉट इम्पोज दैट काइंड ऑफ टैक्सेस पेनल्टीज और इंटरेस्ट. So, requirement of valid law: if the government imposes a tax or free fee for not provide, which is not provided by the legislation, it violates Article 265. For example, Supreme Court in case of Kerala versus Mupali Naya noted that taxing powers flow from law and a tax without a valid statute is unconstitutional. This is often cited in various case law where delegated legislation overreaches. तो जैसे आई ऑलरेडी कवर्ड दिस बिफोर तो अनलॉफुल कलेक्शंस एंड कोई भी जो चीज जहां पे जिसकी स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है यहाँ पे जहां पे डेलीगेशन ऑफ पावर प्रॉपर्ली नहीं हो रखा हुआ है तो दैट इज अनटेनेबल इन लॉ दैट दे कैन नॉट इन्फोर्स सच काइंड ऑफ ऑर्डर इट इज क्वॉशेबल. ओके तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ड्यू प्रोसेस आर्टिकल 21 जो होता है वो करता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. Supreme Court has interpreted this to mean that the procedure must be fair, just, and reasonable, and not arbitrary or oppressive.
जैसे ऐसा कोई जो पर्सनल लिबर्टी को कोई भी अकाउंट फ्रीज कर, जैसे कि बहुत बार आप लोगों के अकाउंट अटैच कर देते हैं या प्रॉपर्टी अटैच करने पे आ जाते, तो आप एंड ऑफिसर इज ऑल्सो, ऑफिसर को आप लिख तो रहे हैं, साथ में आप ऑफिसर को समझाइए भी कि ये जो आप कर रहे हैं दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, टुमारो एक्शन कैन बी टेकन ऑन यू ऑल्सो ऑन डूइंग सच अनकॉन्स्टिट्यूशनल थिंग्स। तो ये चीजें आप अपने पेपर बुक में ऐड करेंगे, देन इट विल ऐड वेट। आर्टिकल 226 रिट रेमेडीज है। रिट रेमेडी जो रिट पिटीशन फाइल के आके स्टे ले सकते हैं, जो भी फॉर एग्जांपल कोई आपको लगता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन की कभी अगेंस्ट कोई चीज होती है ना, तो आप पिटीशन फाइल करके उस पर स्टे ऑर्डर को, बट चीज है कि लाइक आई वाज सेइंग, जहां पे तो बिल्कुल मिस्टेक अपेरेंट है, कि जहां पे क्लियरली दिख रहा है कि जो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थिंग हुई है, वहां पे तो आप इसका आराम से इसका यूज करते हो। लेकिन जहां पे इट इज नॉट अपेरेंट, देन द कोर्ट विल ऑलवेज टेल यू कि आप पहले अपनी जो उस एक्ट में जो भी क्या कहते हैं ऑल्टरनेटिव रेमेडीज हैं, पहले आप उनको एग्जॉस्ट करके आइए, फिर आप यहाँ पे आए। लेकिन यहाँ पे बहुत बारी होता है कि जैसे आपका ये जो है केस जो अपील फाइल करने का टाइम निकल चुका हुआ है ना, और आप अपील फाइल कर रहे हैं, और अपील में वो आपको क्या कहते हैं कंडोन नहीं कर रहे डिले फॉर फाइलिंग ऑफ अपील। देन जब वो डिले नहीं कर रहे कंडोन, देन यू कैन गो, क्योंकि आपकी ऑल्टरनेटिव रेमेडी तो एग्जॉस्ट होगी ना, अपील फाइल वो टाइम ही नहीं अलाउ कर रहे और आपको अपील फाइल करना अलाउ नहीं कर रहे, देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर क्या कहते हैं these appeals, this writ petitions to high courts, and आई थिंक सो कि उसमें आपको क्या कहते हैं जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं और काफी चीजें वो कंसिडर करते हुए हाई कोर्ट उन चीजों को ले लेंगे केसेस को। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो ये बहुत प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ना ये बहुत ही ओवरली यूज टर्म है, बट लोगों को इसमें ये समझ नहीं आता कि इसका बेसिक प्रेमाइस क्या है। आप हर एक चीज में ले लिख लेते हो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हमारे नहीं हुए, लेकिन क्या नहीं हुआ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कब इन्वोक करना है हमने? जब आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया है, जब आपको चीजों का जैसे आपसे चीजें इंफॉर्मेशन ली ही नहीं गई, जब आपको रीजनेबल हियरिंग्स नहीं दी, जब आपको टाइमली नोटिस मिले ही नहीं, तो ऐसी कोई चीज जहां पे हो रही है, वहां पे देयर इज अ ब्रीच ऑफ द टैक्स लॉ, और
regulation or procedural requirement prior to discovery of the breach of officer. Under the proper officer may consider the fact that the mitigating factor when quantifying a penalty for that person. जब भी ऐसी कोई चीज हो रही है, ऑफिसर को इंश्योर करना है, एक प्रॉपर रीजनेबल उसको अपॉर्चुनिटीज देनी है जो टैक्स पेयर को, ताकि वो अपना कंप्लायंस जो है वो कर ले। रेक्टिफिकेशन का ये एक चीज आई वुड से कि कुछ जो आप चीजें लेके जाएंगे आज के वेबिनार्स में, उनमें से एक हो ये रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। जो लोग इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करते हैं उन सबको तो पता होगा हम सेक्शन 154 में क्या यूज करते हैं, मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड का रेक्टिफिकेशन करवाते हैं। अब तो ऑनलाइन फैसिलिटी भी आ गई है। वैसे ही सेक्शन 161 जीएसटी एक्ट 2017 में भी इसका प्रोविजन है। अगर आपका कोई गलती ऑर्डर ऑर्डर इशू करते वक्त उसने कोई गलती कर दी, तो उसमें वो आप उस चीज में भी आप अपनी ऑल्टरनेट रेमेडी कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा आप अपील मत करो, आप विद इन स्टिपुलेटेड टाइम विद इन 60 days आप अपील में जाओ, लेकिन आप इसमें साइड बाय साइड आप रेक्टिफिकेशन के लिए भी फाइल कर दो। आप उसमें उनको बोलो, जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने ऑर्डर में सेक्शंस गलत लिख दी हैं, ऑर्डर में उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स गलत लिख दी है, उसमें ऑर्डर में उन्होंने अमाउंट गलत आपके उठा ली है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन गलत की हुई, बहुत सारी चीजें हैं जो आप ऑर्डर पढ़े, जब आप पढ़ो ना ऑर्डर, आप देखो कि आपके लिए वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाता है कि इतनी सारी चीजें हैं। आप उनको बोलो कि रेक्टिफिकेशन करो इन सब चीजों की। आपका साइड बाय साइड अपील तो आपने फाइल कर ही दी है, उसका आपको हियरिंग जब तक मिलेगी मिलेगी। मीनवाइल आप ये जो है आपका रेक्टिफिकेशन के लिए आप फाइल कर दो। और रेक्टिफिकेशन की एक अच्छी चीज क्या है, जब रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर आता है ना, देन उसके बाद फिर से आपको इट विल बी अ फ्रेश ऑर्डर इन इट सेल्फ। जब अपील करते हो कि आप फिर आपको फ्रेश डेज मिल जाते हैं लिमिटेशन पीरियड में फ्रॉम फाइलिंग योर अपील। तो इट इज अ विन विन सिचुएशन। अगर आपको जैसे लगता है कि इसमें उन्होंने काफी सारी मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड लगा दी है, उन्होंने कोई मिसफिट जजमेंट्स लगा दी हुई है, उन्होंने कोई भी, लेकिन इसमें देखो देयर शुड बी अ मिस्टेक एन एरर ऑन पार्ट ऑफ द ऑफिसर। और वो ऐसा नहीं, आप देख, यू कैन नेवर गो ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ। काफी लोग मैंने देखा कि इवन इनकम टैक्स में भी और जीएसटी के ऑफिसर से भी बात करते हुए जैसे कि अगर कोई रेक्टिफिकेशन के लिए आते हैं तो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे आ जाते हैं। वो तो उन्होंने आपके आर्ग्यूमेंट सुने, आपके आर्ग्यूमेंट उनको टीनेबल नहीं लगे, तो उन्होंने उसको डिसअलाउ कर दिया है। तो दैट इज अ सेपरेट थिंग। वो चीज उस पे नहीं क्या कहते हैं, ठीक करेंगे रेक्टिफिकेशन में। लेकिन कोई गलती उनसे होगी हुई है, उन्होंने गलत कोई सेक्शन लिख दी हुई है, सेक्शन का कोई आप गलत लिख दिया हुआ है, या आपकी कोई पार्टीज का नाम गलत लिख दिया हुआ है, आपकी फिगर्स गलत कंप्यूट कर दी हुई है, या अमाउंट टोटल गलत कंप्यूट कर दिया हुआ है, देन यू कैन सीक रेक्टिफिकेशन। सो आई होप सो it will be enough for today. So किसी को भी कोई queries होगी, I am sharing my number so they can WhatsApp me। मैं अपनी slides भी share कर दूंगा। किसी को भी queries होती है ये मेरे से पूछ सकते हैं, तो I'll be very happy to help। they can WhatsApp me। इनको कोई भी जैसे कि कोई केस लॉस के या किसी के उनको चाहिए, कोई लिंक चाहिए, या फिर किसी ये जो है फ्री साइट्स का वो चाहिए, कोई लिंक शिंक चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर। सो अब while ending this, I would end it on a note, on an inspirational note to all of you. So I remind right now of a young boy. A young boy was about to be hanged in British India. He was a young Indian boy. He when he was about to be hanged, late night, he was about to be hanged. He wrote with a piece of charcoal on the walls of his prison. You know who he was? He was Bhagat Singh. He wrote with a piece of charcoal on walls of his prison. इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर इश्क लिखना चाहूं तो भी इनकलाब लिखा जाता है, अगर इश्क लिखना चाहूं तो भी इनकलाब लिखा जाता है। सो बी सो फियर्स, जो so unapologetic in pursuit of your dreams, and work so hard that everything you dream of you achieve. So I hope all of the chartered accountants who are present today and all of the chartered accountants in our country, they excel in their career. They are an epitome of trust, of resilience, and of expertise. Thank you so much
On this note, I pause my session and over to Ribhav. Ribhav, are you here? And also, thank you so much to CP committee. I've been associated with them for years, and it's always good. And speaking for them feels like coming back to home. And they have always been so cordial, so helpful. So thank you so much for always having me. And I would like to hand over to if anybody from CP committee is online right now. Ribhav, have you come? Uh, he just had some urgent hearing, so he just went. Okay. So we have some questions with us. Yeah, sure, Uh, sure. so one of the question is how and when to exercise remedy of Article 226. See, as far as our articles, as far as articles 2 to 6 is concerned, you can exercise it as and when you think the situations are conducive of exercising it. So article 2 to 6 का अगर मैं जैसे वो ये वर्ड्स लूं तो इसमें क्या है, रिट पिटिशन इज नॉट समथिंग विच इज यू हैव टू डू, मतलब कि इनिशियली अगर फॉर एग्जांपल आपका अभी एडजुडिकेशन हुआ भी नहीं है और रिट पिटिशन आप फाइल करे हो, दैट इज, और वो आपको कोर्ट भी अलाउ नहीं करेगा, व्हेन योर ऑल ऑल्टरनेट रेमेडीज हैव एग्जॉस्टेड ओनली देन यू कैन एक्सरसाइज इट। हाँ, या फिर ऐसी कोई चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी है विच इज वेरी अपेरेंट, विच इज वेरी ब्लेटेंट एंड विच इज वेरी सब्सटैंशियल unconstitutional thing has happened in your order, then you can easily take up article 2 to 6 and file writ petitions. Any other questions? There is one more big question. I'm trying to find how can I rephrase it. Uh, a beauty salon provides haircuts, beauty treatments, and sells shampoo and other beauty products to customers. And as per Hmm. recent notification, hair salons can opt for a 5% GST rate without input tax. And Hmm. another question is whether the salon can option one 5% GST rate without input tax credit for salon services, pay 18% GST with input tax credit for the sale of beauty products. Third, file GST return under the same GST IN, including both 5% without input tax credit and 18% with input tax credit, maintaining separate accounts and for goods and services in compliance with Rule 42 of GST rules, reversal of common credit, and fourth, Yeah, I need to think so. take It is need to very take ये another. multiple ये questions है. I've given them my number, so they can just WhatsApp me that मैं उनको point by point वो उसका जवाब दे दूंगा. ये हाँ it जी. will take another half an hour to एक एक point पे मेरे को करते हुए वो. Yes, yes, And it would also be digression from the today's yes, topical yes, GST yes, sir. litigations. That is something else, HSN codes और circulars वगैरह निकले हुए हैं. Yes. But still I will cover it. वो मुझे question भेज दे क्योंकि मुझे समझ भी नहीं आया ये इसमें उन्होंने पहले देखो आईटीसी आपके पास दो ऑप्शंस हैं उसमें, है ना, या तो आप विद आईटीसी क्या कहते हैं ले सकते हैं, पे कर सकते हैं हायर रेट, और विदाउट आईटीसी आप क्या कहते हैं जैसे हमारा जैसे रोड ट्रांसपोर्ट के भी क्या कहते हैं जो बसेस होती हैं, बसेस पे भी होता है या तो विद आईटीसी क्या कहते हैं 12% वगैरह करते हैं, विदाउट आईटीसी 5% पे दे दे। और वैसे ही हमारा ये जो क्या कहते हैं ऑप्शन होता है काफी रेस्टोरेंट्स में भी होता है और काफी ज्यादा जहाँ पे कॉम्पोजिशन और वहां पे जहाँ पे उन्होंने रिलैक्सेशन दे के रखी होती है, तो वहां पे एट लोअर रेट जब आपने करना है तो देन यू कैन नॉट अवेल आईटीसी। तो दैट इज अ थंब रूल। बट स्पेसिफिक जो उनका कोई एक केस उनकी केस में है, जो केस में उनका मुझे थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा जो क्या क्वेश्चन है डिटेल में, देन आई विल आंसर देम। उनको दे कैन कांटेक्ट मी, दे कैन व्हाट्सएप द क्वेश्चन टू मी, आई विल रिस्पोंड टू देम। एनी अदर क्वेश्चंस? Thank you, sir. Sir, can you just share your screen and show your number again because I mean it's up to you. Because members are ओके asking ओके, the श्योर questions. श्योर श्योर।
This is my number 9796855559. Uh, and also, members who miss this session or any other session, they can go to ICI TV for all these sessions. All the recordings are there available on ICI TV. Thank you, sir. Thank you for this wonderful session. I Thank hope you so much members for understood. having me. Thank you so much for Thank having you, sir. me. It was great attending it. Thank you, sir.